of the prerequisites for invoice upload. You need to have a valid email ID. So all the vendors should have email ID to which the registration links will be sent. So to log into the portal, you first need to register yourself. To register, we will be sending the registration link via email. Make sure that your correct email ID is updated in OIL's SAP system. In case you're not sure or you want to update your latest email ID in OIL's SAP system, please send an email to erp_mm@oilindia.in. I will repeat, erp_mm@oilindia.in to just change your email ID from your already registered email ID. Most probably, whatever email in which you got your invitation for this training session will be your registered email ID. So OIL also has already sent emails and letters to vendors to submit their valid email ID. Next one is related to the digital signature. All the invoices that are uploaded on the portal have to be digitally signed using a class 3 digital signature with organization name. Invoices will not be accepted if they are not digitally signed. So make sure that you have the digital signature in place before you start uploading your invoices on the portal. eGST invoices as per SOP of GST portal do not require additional e-signing. So the eGST invoice that you are creating can be directly uploaded in the portal. No need of digital signature for eGST invoices. PDF e-signing as per SOP of GST portal will be accepted. Handwritten invoices will not be accepted. We are using a software called optical character recognition, OCR, to read or scan the invoice copy which you are uploading and read the data and transfer the data to SAP. In case of handwritten invoices, the software will not be able to recognize or read the data. So please make sure that you use a computer generated invoice copy. When I say computer generated, it need not be generated by a software or an application. You can use Word or Excel to create your invoice, convert it into PDF and digitally sign the invoice. This is a mandatory requirement that you do not use handwritten invoices. Supporting the documents may not be digitally signed. Whatever supporting documents you are submitting along with the invoice, they may not be digitally signed. Import invoices submitted by foreign vendors may not be digitally signed. Similarly, invoices submitted through the bank, when you are submitting your invoice through the bank, the original document will go through the bank. Those invoices you need to upload a copy or PDF copy of the invoice in the portal for invoice processing. They may not be digitally signed. Similarly, GEM invoices you need to upload in the GEM portal. Whatever GEM contracts or GEM purchase orders you have, you need to upload them only in the GEM portal, not in this portal. So vendor portal पर invoice upload करने से पहले आप कुछ prerequisites का ध्यान रखेंगे. First, आपका करेक्ट ईमेल आईडी ही ऑयल टीम को देंगे. उसी ईमेल आईडी पर आपको रजिस्ट्रेशन लिंक मिलेगी वेंडर पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और लॉगिन करने के लिए. तो आप ध्यान रखें कि आप करेक्ट ईमेल आईडी ही ऑयल टीम को दें, बिकॉज आप मोस्ट प्रोबेबली ये वही ईमेल आईडी है जो वेंडर कोड क्रिएशन के टाइम यूज की गई थी, जो ऑलरेडी ऑयल टीम के पास में उनकी ERP सिस्टम अवेलेबल है. आपको अगर आपका ईमेल आईडी जानना है तो आप मेल कर सकते हैं erp_mm@oilindia.in पर. क्लास एक सेकंड, आपकी इनवॉइस पर आपको क्लास 3 डिजिटल सिग्नेचर अप्लाई करनी है विद ऑर्गेनाइजेशन नेम. जब आप इनवॉइस अपलोड करेंगे वेंडर पोर्टल पर तो आप ध्यान रखिए कि उस पर क्लास 3 डिजिटल सिग्नेचर एप्लीकेबल हो. अगर वह सिग्नेचर वह इनवॉइस विदाउट डिजिटल सिग्नेचर अपलोड की जाएगी तो वह एक्सेप्ट नहीं की जाएगी और रिजेक्ट हो सकती है. तो आप इस बात का भी ध्यान रखें. eGST इनवॉइसेस के लिए एडिशनल ई साइनिंग की जरूरत नहीं है. सिमिलरली PDF ई साइनिंग भी एक्सेप्ट की जाएगी, उसके लिए भी एडिशनल ई साइनिंग की जरूरत नहीं है. हैंड रिटन इनवॉइसेस एक्सेप्ट नहीं की जाएगी. अगर आपके इनवॉइस पर कुछ भी हैंड रिटन है, पेन या पेंसिल से कुछ भी लिखा हुआ है, तो वह इनवॉइस एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, बिकॉज हम एक OCR सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन. यह इनवॉइस पर लिखे कैरेक्टर्स को रीड करता है. सो कंप्यूटर जनरेटेड इनवॉइस के कैरेक्टर्स को ही यह रीड कर पाएगा और वही डेटा आगे प्रोसेसिंग के लिए जाएगा. तो आप ध्यान रखें कि आपके इनवॉइस कंप्यूटर जनरेटेड होना चाहिए, हैंड रिटन नहीं होना चाहिए.
और कंप्यूटर जनरेटेड इनवॉइस पर भी कुछ भी हैंड रिटन या पेन या पेंसिल से लिखा हुआ चेंज नहीं होना चाहिए। आप एडिशनल डॉक्यूमेंट जो सबमिट करेंगे वेंडर पोर्टल पर उस इनवॉइस से रिलेटेड, उसके लिए डिजिटल सिग्नेचर की जरूरत नहीं है। इंपोर्ट इनवॉइसेस के लिए भी डिजिटल सिग्नेचर की जरूरत नहीं है। जो इनवॉइसेस आप बैंक के थ्रू सबमिट करते हैं उसके लिए भी डिजिटल सिग्नेचर की जरूरत नहीं है। जेम इनवॉइसेस आप एज इट इज अपलोड करेंगे जैसे अभी तक आप जेम पोर्टल पर करते आ रहे हैं। जेम इनवॉइसेस इस पोर्टल पर अपलोड नहीं की जाएगी। Now let us look at some of the do's and don'ts for invoice uploads. First, we will be looking at what you should be doing while uploading the invoice. So you have to upload a digitally signed PDF document in the invoice upload section only. So in the portal, we have given two sections, invoice upload section and supporting documents upload section. So please upload the invoices only in the invoice upload section. Only one invoice in one upload. So every invoice, whatever you are creating, they have to be separately converted into a PDF document. Then you need to digitally sign it and upload it separately. Every invoice has to be separately converted into PDF, separately digitally signed and uploaded in the portal. However, each invoice can have multiple pages. There is a restriction on the overall size of an invoice. Up to 10 MB it will accept. So definitely it will accept multiple pages. So you can create one invoice with multiple pages and upload in the portal. Only one PO or contract per invoice. So in the portal, we have given a provision to upload purchase order related invoices separately, service contract related invoices separately, and non-PO invoices. Non-PO is wherever you don't have a formal purchase order or a formal contract from Oil India, then you need to use the non-PO mode. So whenever you are referencing a purchase order or a contract, please make sure that in each invoice you have only one PO referred. However, for a purchase order, you can have multiple invoices uploaded. So in case you are doing partial shipment or partial supplies, the system will accept up to the purchase order quantity. So you can do multiple invoices for a purchase order. Upload invoices separately and supporting documents separately. So like I said before, there is a separate section for invoice and there is a separate section for supporting documents. So invoices have to be uploaded in the invoice section and supporting documents have to be uploaded in the supporting documents. HSN code needs to match with the purchase order. Whatever HSN code you are entering in the invoice, they have to match with the purchase order. So there is a provision in the portal to display the HSN code or SAC code as per the purchase order. So when you are uploading, make sure that you check what is entered in the invoice and what is displayed on the portal. In case they do not match, please contact your oil officer and get the HSN code changed in the PO in case whatever you have put in the invoice is correct. Next one, invoice number should be entered in the portal as per the invoice copy. So there is a provision to enter the invoice number on the portal. So just enter whatever invoice number you have updated in the invoice copy. The same number has to be entered here also. Ensure now all necessary supporting documents are attached during the invoice upload. So as per your agreement or contract with Oil India, you might need to submit mandatory supporting documents. Wherever it is mandatory for you to submit supporting documents, make sure that all those supporting documents are uploaded in the portal along with the invoice. This will ensure smooth processing of your invoice. POC email ID is referring to the point of contact. So this refers to the person with whom you are dealing in oil for all your procurement needs and your invoices, whatever you are submitting. So POC will be mandatorily needed for service procurement cases and wherever you are using non-PO mode. Wherever there is a material procurement and you have a formal purchase order, POC email ID is not needed. For service procurement and NPO cases, you will need a POC email ID. So make sure that you enter the correct POC email ID. In case you do not know the POC email ID, you can get in touch with your oil officer with whom you are regularly interacting and get the POC email ID. And this needs to be entered in the portal. So once you enter this POC email ID and submit the invoice, automatically an email will be sent to the oil representative or oil officer
who is dealing with your particular procurement. And he will be notified that you have uploaded an invoice, and there will be also a copy of the invoice in the email. So he will know immediately that you have submitted the invoice. This will ensure faster processing of your invoice. Now let us look at some of the don'ts. Do not combine invoices. If invoices are combined in one PDF, they will be rejected in SAP Win. So like I said before, each invoice has to be separately converted. When you combine the invoices, they will be rejected. So one document, one invoice only should be there. Do not combine invoices and supporting document in one PDF. So you cannot convert invoice and supporting document into one document and upload in the portal. They have to be separate documents. However, supporting documents can be combined together. So we have given a provision to upload up to 4 supporting documents. So supporting documents can be clubbed or combined together and uploaded as a single document. There is a restriction of size of 30 MB per document. Totally, you have 4 documents. So in all, you can upload up to 120 MB of supporting documents. You can combine into one document and upload, or you can upload separately as 4 supporting documents. Do not save PDF document using the print option. So whenever you are creating an invoice, make sure that you made all the necessary changes in the invoice document. Then you convert it or export it as PDF. Then you digitally sign it. Once you digitally sign it, you should not use the print option that is available to save the document. So if you use the print option and save the document, then the properties of the digital signature will be lost, and the oil officer who is validating or processing your invoice will not be able to check whether you have uploaded a invoice with a valid digital signature. So make sure that the properties of the digital signature are visible in the uploaded copy of the invoice. So if you upload invoices in supporting document section, then those invoices will not be processed. So make sure that you upload the invoices only in the invoice upload section. सो वेंडर पोर्टल पर इनवॉइस अपलोड करने से पहले कुछ डूज एंड डोंट्स है वो देख लेते हैं. पहले हम देखते हैं डूज. सो जो आपका डिजिटली साइन पीडीएफ इनवॉइस कॉपी है जो आप वेंडर पोर्टल पर अपलोड करेंगे, उसे आपको इनवॉइस अपलोड सेक्शन में ही अपलोड करना है. वेंडर पोर्टल पर 2 ऑप्शन दिए गए हैं, एक इनवॉइस अपलोड करने के लिए और एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए. तो आपको इनवॉइस सिर्फ इनवॉइस अपलोड सेक्शन में ही अपलोड करना है. एक टाइम पर आप एक ही इनवॉइस अपलोड करेंगे. अगर आपके पास में एक पीओ है और तो आप उस पीओ के लिए मल्टीपल इनवॉइसेस अपलोड कर सकते हैं, बट 1 बाय 1 एक टाइम पर आप एक ही इनवॉइस अपलोड करेंगे. एक इनवॉइस में मल्टीपल पेजेस हो सकते हैं, लेकिन आप एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट में 2 इनवॉइस डिफरेंट के साथ मर्ज करके अपलोड नहीं कर सकते हैं. एक पीओ या कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको एक ही इनवॉइस अपलोड करना है. अगर आपके पास में 5 पीओ या 5 कॉन्ट्रैक्ट इनवॉइसेस अवेलेबल है, तो आप उसे 1 बाय 1 अपलोड करेंगे, एक साथ अपलोड नहीं करेंगे. आपको इनवॉइस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सेपरेटली सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सेक्शन में और इनवॉइस आपको सेपरेटली इनवॉइस सेक्शन में अपलोड करना है. सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप वेंडर पोर्टल पर देखेंगे, आप 4 सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं. हर एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का साइज 30 MB होगा. 30 MB से ज्यादा आप अपलोड नहीं कर सकते हैं. अगर आपके पास में मोर देन 4 सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, तो आप मर्ज कर सबमिट कर सकते हैं. आप इनवॉइसेस मर्ज नहीं कर सकते, पर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मर्ज कर सकते हैं. आपको HSN कोड का खास ध्यान रखना है. जो इनवॉइस पीओ या कॉन्ट्रैक्ट इनवॉइस आप वेंडर पोर्टल पर अपलोड करेंगे, उस पर जो HSN कोड लिखा है, वह HSN कोड आपके पोर्टल पर अवेलेबल पीओ या कॉन्ट्रैक्ट का जो HSN कोड पोर्टल पर अवेलेबल है उससे मैच करना चाहिए. अगर दोनों HSN कोड में कुछ भी डिफरेंस आता है, तो आप ऑयल रिप्रेजेंटेटिव को कोऑर्डिनेट करेंगे, उनसे उससे चेंज करवाएंगे अपने पीओ पर और फिर इनवॉइस अपलोड करेंगे. वेंडर पोर्टल पर एक ऑप्शन हमने दिया है जहां पर आपको इनवॉइस नंबर एंटर करना होता है. सो आप ध्यान रखिए कि आप वही इनवॉइस नंबर एंटर करें जो आपकी इनवॉइस कॉपी पर लिखा हुआ है. दोनों नंबर मैच करना चाहिए. आप यह भी इंश्योर करेंगे कि जितने भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट उस इनवॉइस से रिलेटेड है, आप वो सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट सेक्शन में अपलोड करेंगे. पीओसी ईमेल आईडी का खास ध्यान रखना है. पीओसी ईमेल आईडी है ऑयल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आईडी, मतलब यह
उस पर्सन की आईडी है फ्रॉम ऑयल साइड जिनसे आप कोऑर्डिनेट करते हैं आपके पीओ या कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड डिटेल्स के लिए। सो आप ध्यान रखें कि आप सही पर्सन की ईमेल आईडी एंटर करें फ्रॉम ऑयल साइड, बिकॉज जैसे ही आप इनवॉइस अपलोड करेंगे इन्हें नोटिफिकेशन जाएगा कि आपने इनवॉइस अपलोड की है और वह उस इनवॉइस को देखकर उसे इजीली प्रोसेस कर पाएंगे। कुछ डोंट्स हैं जो देख लेते हैं। आपको इनवॉइसेस कंबाइन नहीं करनी है। अगर आपने 2 या 3 इनवॉइस एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट में कंबाइन कर अपलोड की तो वह आगे जाकर रिजेक्ट हो जाएगी। तो आप ध्यान रखें, आप इनवॉइसेस कंबाइन करके अपलोड ना करें, 1 बाय 1 ही करें। वैसे ही आपको इनवॉइसेस और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को भी एक साथ मर्ज करके अपलोड नहीं करना है। इनवॉइस सिर्फ इनवॉइस सेक्शन में अपलोड करेंगे, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में अपलोड करेंगे। आप जो इनवॉइस अपलोड करेंगे वेंडर पोर्टल पर, जिस पर आप डिजिटल सिग्नेचर अप्लाई करेंगे, उसे आपको प्रिंट का ऑप्शन कर सेव नहीं करना है। बिकॉज अगर आपने प्रिंट का ऑप्शन यूज कर सेव किया तो उस सिग्नेचर की डिजिटल प्रॉपर्टी लॉस्ट हो जाएगी और फिर वैलिडेटर उसे वैलिडेट नहीं कर पाएगा। सो आप ध्यान रखें कि आप उसे प्रिंट ऑप्शन का यूज कर सेव नहीं करें। जितने भी नेसेसरी चेंजेस आपको आपके इनवॉइस पर करने हैं वो आप पहले ही कर लें। उसके बाद आप उसे पीडीएफ में ओपन करें, डिजिटल सिग्नेचर अप्लाई करें और रीनेम कर सेव कर दें। प्रिंट ऑप्शन का यूज कर सेव ना करें। आपको इनवॉइसेस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सेक्शन में अपलोड नहीं करनी है। अगर आपने इनवॉइस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सेक्शन में अपलोड की तो वह प्रोसेस नहीं हो पाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। सो आप यह भी ध्यान रखें।